everyone. So from now we will start study studying economics with you. I will study economics from Parmar Sir's notes PDF. I will start economics. It is of 126 pages. So let's start. The first chapter is basic of economics. I will highlight the word which will be important and जिनको हम आगे मतलब जस्ट सेकेंड रिवीजन में जिनको हम मेनली पढ़ेंगे. सो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स use allocated resources to produce, distribute, and consume goods and services. It analyzes decision making regarding what to produce, how to produce, for whom to produce, and at what price to sell. So I don't think here any need to make understand anything. So let's go ahead. Branches of economics: macroeconomics and microeconomics. Everyone knows macroeconomics for broad perspective and microeconomics is for small perspective. So that is little thing to remember, that in macroeconomics it is टॉप टू डाउन अप्रोच, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं. एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम बॉटम टू अप अप्रोच, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी. ओके. Microeconomics focus on the actions of individuals, specific firm or business. This is the thing what I told you before, that macroeconomics में हम एक पूरी इकोनॉमी को समझते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक छोटी फर्म या बिजनेस या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल की चीज़ों को, इकोनॉमी को समझते हैं. इसको लार्ज स्केल कवर्स entire economy, small scale covers specific sector or market. That's the same thing. GDP, inflation, fiscal policy, national income, unemployment, spillover effect come under macroeconomics, and pricing of specific products, consumer behavior, supply and demands for firms comes under microeconomics. You can also understand by yourself that this is the thing where the entire economy concepts came, and this is the thing where a small business specific firm schemes. So in macroeconomics study of entire forest, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर एनोलॉजी अगर हम समझें तो दिस इज गिवन फॉर एनोलॉजी. लाइक अगर हम एक जंगल से कंपेयर करें, अगर हम पूरे जंगल को पढ़ें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्री या जैसे दिस इज़ द ट्री नेम गिवन, अगर इसको पढ़ें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या ऊपर आएगा. दिस इज़ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज स्पिल ओवर इफेक्ट. मैक्रो economics consider the spillover effects where an event in one part of economy impacts other, uh, affecting. Oh, okay. So here spill over effect is like, अगर वर्ल्ड में एक जगह कुछ हो रहा है और वो दूसरी को भी इफेक्ट करेगा तो वो चीज़ स्पिल ओवर इफेक्ट कहलाती है. जैसे यूएस में ग्रेट डिप्रेशन अफेक्टिंग अदर नेशन. यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था कि महामंदी कहते हैं यूएस की महामंदी, जिससे और देशों में भी चीज़ों के दाम बढ़े. सो दैट इज़ कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट. So that thing we can important. So in this space there are three terms which is important: top down approach, bottom up approach, and spillover effect. Sorry. Key historical figures and texts. Okay, that name is important: Adam Smith, father of microeconomics or modern economics. This is important. In role was considered the founding father of modern economics and macroeconomics. Same thing. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, commonly known as the wealth of nation, published in 76. So इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में पब्लिश हुई है.
So this thing is important. What is market economy? Core concept है market economy propose that if individuals pursue their own self interest animal spirit it benefits the economy as whole. So अगर if you want to understand that thing market economy, so it is saying that if a person वो अपने बेनिफिट के लिए काम करे तो वो पूरे मार्केट को बेनिफिट पहुंचा देगा. लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल दैट इफ प्रोड्यूसर wants to जनरेट मोर इनकम, लाइक अगर वो उसको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें बनाएगा तो वो ज़्यादा लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम पे रखेगा. ज़्यादा लोगों को फैक्ट्री में काम रखेगा तो ज़्यादा लोगों को पैसे मिलेंगे. ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा तो वो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी तो द जो फैक्ट्री ऑनर है उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा. दिस इज़ अ सर्कल. जो फैक्ट्री का ओनर था उसने पैसे ज़्यादा बनाने के लिए काम किया, दैट इज़ एनिमल स्पिरिट, उससे सबको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट्स द इकोनॉमी एज अ होल. So that is market economy. The invisible hand, a metaphor describing the unseen forces, market forces of a demand and supply that move the free market economy towards efficiency without government intervention. This is the same thing which I told you before that एक चीज़ जो मार्केट, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं हो रहा है कि फैक्ट्री के ओनर ने सामान ज़्यादा पैसा ज़्यादा कमाना चाहा तो सामान ज़्यादा बनाने के लिए उसने ज़्यादा मज़दूर रखे, ज़्यादा मज़दूरों को ज़्यादा सैलरी मिली तो डिमांड ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा वस्तुएं की डिमांड हुई और ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड हुई तो फैक्ट्री ने ज़्यादा चीज़ें बनाने की सोची और उससे ज़्यादा पैसा मिला फैक्ट्री ओनर को. ये सर्कल है. दिस इज इनविजिबल हैंड. सो दैट थर्ड टर्म वी नीड टू गो. वी कैन highlight these terms. uh, the laissez-faire, a policy of least interference by the government allowing the market to operate freely. So this is the simple term ki laissez-faire is, yeah, this can you remember by let's it fair. सबके लिए फेयर रखते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम करते हैं जिससे कि मार्केट फ्रीली ऑपरेट हो जाए. नाउ अल्फ्रेड मार्शल, दिस इज द नेम which is important, father of microeconomics. Remember, father of microeconomics and modern economics is Adam Smith. Alfred Marshall is called father of microeconomics. You need to see the options there. Option क्या है? If both Adam Smith and Alfred Marshall appear in the option, choose Adam Smith. If there is an option only Alfred Marshall, you take Marshall. If there is Adam Smith in the option, you will choose Adam Smith. If they both are in option, you will choose Adam Smith. So these are some statements given by like popular economists. Like most of our decisions are taken as a result of animal spirit. I told you before that what is animal spirit is. This is said by John Maynard Keynes. Managing animal spirit requires active role of the government. This statement is said by Robert J. Sealer. Uh, we need to revive the animal spirit in the country's economy. This statement is told by Manmohan Singh. So John Maynard Keynes, he is also called as father of macroeconomics. This is important now. John Maynard Keynes, macroeconomics father. His role is a British economist whose theories helped the US emerges from Great Depression. Okay. Key work, The General Theory of Employment. This is important. The General Theory of Employment by John Maynard Keynes. Interest and Money.
The General Theory of Employment, Interest and Money is published in 1936 by John Maynard Keynes. His theories emerged in response of Great Depression in 1929. So you can this thing you can remember that the Great Depression comes in 1929, a period of severe economic downturn, deflation, and high unemployment started by a stock market crash. The core concepts, unlike the strict laissez-faire approach, Keynes argued that government intervention is necessary to manage animal spirit and revive the economy during downturn. It is understandable. So now economic system. We will go in economic system. There are three type of economic system based on ownership, motive, and government role. So first is capital economy, socialist economy, mixed economy. It is understandable by its terminology. Capitalist matlab means private ownership, socialist means public and state ownership, and mixed means public and private ownership. India has this type of economy. So in capitalist economy, profit maximization, because a private company is there, he always wants its benefit, profit maximize. In socialist economy, social welfare is motive, and in mixed economy, both profit and social welfare will be motive. In capitalist economy, no role, least interference, laissez-faire. Socialist economy, complete involvement. Mixed economy, limited regulation role. Capitalist economy, income distribution is unequal, highly inequality. Socialist economy equal theoretically, because we said that we says that in socialist economy the इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल, बट हम भी जानते हैं वो थियोरटिकली संभव है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सबके पास एक समान ही रुपए हों. और मिक्स्ड इकोनॉमी लेस अनइक्वल. फ्रीडम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई भी आ सकता है. सोशलिस्ट में लैक ऑफ फ्रीडम, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. मिक्स्ड इकोनॉमी लिमिटेड फ्रीडम, किसी चीज़ में लेनी भी पड़ती है, किसी चीज़ में नहीं भी लेनी पड़ती है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल यूएसए है. सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर रशिया एंड नॉर्थ कोरिया. मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया. So there is nothing important in this, because these things are understandable by terminology. अगर इन इकोनॉमिक्स अगर आप टर्म्स को समझ लेते हो, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. So from here, note on India. Prior to 1991, India operated under the license Raj. This is important. 1991 से पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, जिसे परमिट राज भी कहते थे इंडिया में. रिक्वायरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर बिजनेस फॉलोइंग द बैलेंस फॉर पेमेंट्स क्राइसिस. The LPG reforms, liberalization, privatization, globalization were introduced in 1991 by P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh to open up the economy. LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization was introduced in 1991. इसमें लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया और हमारी जो मार्केट है वो सब लोगों के लिए खोली गई. इस टाइम पे हमको याद रखने हैं, प्राइम मिनिस्टर वॉज पीवी नरसिंह राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. नाउ वी विल गो in that thing. Goods are classified based on two criteria: excludability and rivalry. Excludability क्या होती है? Now we will go in this. Is it possible to prevent someone who hasn't paid from using the good? You must pay to use it. Easy buying. Example, buying a ticket. Non-excludable. You cannot prevent anyone from using it. Air, free YouTube videos. Rivalry. Does one person's consumption reduce their availability for others?
Rivalrous. If I consume it, you cannot. Eating an apple. Buying a limited edition car. Non rivalrous. My consumption does not affect your. Example, watching a sunset, breathing air. If I make it understand to you that excludable वो चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, और नॉन एक्सक्लूडेबल दैट थिंग्स जिनको आपको कोई आपको रोक नहीं सकता उनको यूज करने से, या आपको पे नहीं करना पड़े। राइवलरस ये होता है कि जिसमें आप अगर कंज्यूम करो तो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लाइक आपने सेब खा दिया तो दूसरा व्यक्ति वो सेब नहीं खा पाएगा। अगर लिमिटेड एडिशन कार आपने खरीद ली तो दूसरा आदमी वो नहीं खरीद पाएगा। नॉन राइवलरस में इसका उल्टा होगा कि मेरे कंजम्पशन से आपके कंजम्पशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर मैं सनसेट देख रहा हूँ तो आप भी देखो, मैंने आपकी आंखें रोक जो के रखी हैं। सॉरी फॉर दैट थिंग, बट दीज आर थिंग्स। Now we can divide our goods in four types. A good which is rivalrous and excludable is called private good. A good which is non-rivalrous and excludable called club goods. A good which is rivalrous and not excludable is common pool resources. A good which is non-rivalrous and non-excludable is called public goods. Now ये राइवलरस क्यों था? जिनके लिए जो इफ़ मैं यूज कर रहा हूँ तो कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। और एक्सक्लूडेबल क्या चीज़ है कि मुझे पे करना पड़ रहा है। अब नाउ फूड, फूड के लिए हमें पे करना पड़ता है। क्लोथिंग कार्स पार्किंग स्पेस, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ये आ गए एक्सक्लूडेबल। राइवलरस, अब हमने कोई फूड खा लिया तो दूसरा उस फूड को नहीं खा पाएगा, तो ये भी है। नो क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल है, मीन्स इनके लिए हमें पे करना पड़ रहा है। सिनेमा, प्राइवेट पार्क, सैटेलाइट टीवी, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कोई एक कम ही जो की है, एक फिक्स जो की है कि जो हम यूज करेंगे तो कोई और नहीं यूज कराएगा। तो ये नॉन राइवलरस हैं कि हम यूज करने से किसी दूसरे में इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कॉमन पूल रिसोर्सेज, दिस इज नॉट नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़े। फिश स्टॉक इन ओशियन, जाओ निकाल के खा लो। मगर राइवलरस हैं जो फिक्स हैं, अगर आपने निकाल लिया तो दूसरा नहीं निकाल पाएगा। टिम्बर इन फॉरेस्ट, कोल निकालो भाई, फ्री एक्सेस है। बट राइवलरस हैं, अगर आप निकाल रहे हो तो दूसरा नहीं निकाल पाएगा। पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल, मीन्स आपको पैसे नहीं देने पड़े। अगर को नेशनल डिफेंस, एयर स्ट्रीट लाइट्स, फेयर्स टू एयर टीवी। नेशनल डिफेंस के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, हवा के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, स्ट्रीट लाइट के लिए पैसे नहीं पड़ रहे। नॉट ये नॉन राइवलरस, ना आपके यूज से कोई दूसरे को इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी यूज कर पा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन ऑल्सो यूज। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो एग्जाम्पल देता है विच इज़ पब्लिक गुड और नॉट। उसमें दो चीज़ें देंगे कि बस सर्विस बाय गवर्नमेंट, और you can say public bus and police. There are two options and you need to choose one of them which is public good. पब्लिक बस में यू नीड टू पे, सो वो पब्लिक गुड पे नहीं आएगा क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है। उसके लिए आपको पे नहीं करना है। बस के लिए आपको पे करना पड़ रहा है तो बस वाला ऑप्शन कैंसिल होगा। पुलिस के लिए आपके लिए पे नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता या नहीं करना पड़ता, सो वो पब्लिक गुड के अंदर आएगा। नेक्स्ट टर्म इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, लाइक यू हैव टू ऑप्शंस, एक ये पेन थी एक ये पेन थी, लेकिन आपने ये पेन खरीद ली, सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके पास था उसके प्राइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट alternative given up. Natural resources like sunlight often have zero opportunity cost for the consumer. Free rider problem.
A challenge with public goods where people benefits without paying, easy using a street light without paying taxes, so that is understandable by term only. Next is sector of economy. There are mainly three sector of economy, but the third sector is further divided into subdivisions, that is quaternary and quinary. So primary sector, these thing red collar job, that is also important. Definition: activities directly depend on the environment और nature. वो एक्टिविटी जो सीधे प्रकृति से निर्भर हो, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग. दिस इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. पूछ सकता है कौन सा सेक्टर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहलाता है, तो दैट इज प्राइमरी सेक्टर. सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर. ब्लू कॉलर जॉब इज ऑल्सो a term used for secondary sector. So transform raw material into valuable products, so it is manufacturing and processing. जैसे गन्ना, if गन्ना is primary sector, गन्ने को चीनी में फैक्ट्री बदल रही है तो वो सेकेंडरी सेक्टर होगा. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग फूड. कंसिडर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस. It is the backbone of the industrial nations. Example China. This is also important. Status of India. This sector is not yet properly developed in India, unlike the standard path of development. India's economy effectively jumped directly to the tertiary sector, skipping the phase of strong industrialization. Tertiary sector, white collar jobs. The service sector produce intangible service rather than goods. टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, जैसे टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल. सब डिवीजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, इसमें आई टोल्ड यू क्वाटरनरी एंड क्यूनरी. क्वाटरनरी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, रिसर्च डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंट. एंड इन क्वीनरी sector, this is also called gold collar jobs, that is decision making and policy creation jobs like top government officials, COO, research scientist, policy makers. Sector statistics. India 2021 census. दिस इज 2011 जनगणना के अनुसार सेक्टरों की क्या स्टेटिस्टिक्स थी. प्राइमरी सेक्टर में 54.60 लोग नौकरी करते थे, लेकिन इसका जीडीपी शेयर 14.39% था. सेकेंडरी सेक्टर में 24.30% लोग काम करते थे, बट द जीडीपी शेयर वॉज 31.46%. And in tertiary sector, 21.10% people works, but the GDP share was 54.15%. So this is the thing which are necessary to remember, that प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में शेयर सबसे कम है. एंड टर्शियरी सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, बट जीडीपी में शेयर सबसे ज़्यादा है. This term LFPR is called labor force participation rate. Percentage of women engaged in primary sector is 62.8%. So that is also like important fact. Now other economic classification, organized versus unorganized. This is an easy term to understand. Organized sector जो organize होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं होती. नॉन रजिस्टर, इरेगुलर वैगेज, नो जॉब सिक्योरिटी, नो बेनिफिट्स. एग्जाम्पल स्मॉल शॉप हेल्पर्स. इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ वर्कर्स आर अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज, रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, फॉलो लेबर लॉज, प्रोवाइड्स जॉब.
security, fixed hours, PF pension benefits. These are organized initiative. The eSaram portal was launched to register unorganized worker. eSaram portal. This is important. You need to remember. It is for register unorganized worker. Real versus financial sector. This is important. Real sector involves the actual production of goods and services using raw material, land and labor. Financial sector deal with financial assets like mutual fund, stock and banking services. रियल सेक्टर वो होता है जिसमें सर्विस और गुड प्रोड्यूस हो रही हो. फाइनल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर इसमें होता है जिसमें मनी का लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है. जैसे कहीं प्रोडक्शन हो रहा है चाय का, चीनी का, टीचिंग हो रही है, गुड्स बन रहा है, सर्विस बन रही है. दैट वाज रियल सेक्टर. म्यूचुअल फंड्स का ट्रांजिशन हो रहा है, स्टॉक्स का ट्रांजिशन हो रहा है, पैसों का ट्रांजिशन हो रहा है. दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर. Aids to trade. Factors essential for moving goods from production to consumption. These are support services, not the raw materials themselves. Transports, banking, insurance, warehouse, advertise. This is understandable. Normative versus positive economy. Based on facts, actual data, and what is it is scientifically verifiable. The unemployment rate is 20%. Normative economy based on opinions, value judgments, and what ought to be. It is idealistic. Example, unemployment should be 5%. पॉजिटिव इकोनॉमी जो फैक्ट पे बेस्ड हो, एक्चुअल डाटा हो, क्या क्या है रियल में, एंड साइंटिफिकली वेरीफिएबल हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, वो पॉजिटिव इकोनॉमी कहलाएगी. नॉर्मेटिव इकोनॉमी जिसमें ओपिनियंस हो, जजमेंट हो, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हो, आइडियलिस्टिक हो, वो होगी नॉर्मेटिव इकोनॉमी. लाइक अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी 5%, अनएम्प्लॉयमेंट 5% होना चाहिए. पैरेलल इकोनॉमी refers to the functioning of an unsanctioned sector often driven by black money, unaccounted income, or income from illegal activities like trafficking. It makes government policies ineffective because this money is not taxed or regulated. This is understandable by words itself. So, our first chapter, Basic of Economics, is completed here.